Beontvuk for the community, by the community. www.beontvuk.com. Beontvuk for the community, by the community. www.beontvuk.com. আইলানা ঘরের শপিং করলানা সোনালী সুপার মার্কেটের হয় না তুলনা গো সোনালী সুপার মার্কেটের হয় না তুলনা সোনার বাংলার তাজা সবজি মিঠা পানির মাছ বছর ঘুরে সৌদা করো আছে মূল্য হ্রাস ওল্ডামার বার্মিংহামে সোনালী সুপার মার্কেটে ঘুরে একবার আসো না সোনালী সুপার মার্কেটের হয় না তুলনা গো সোনালী সুপার মার্কেটের হয় না তুলনা সোনালী সুপারমার্কেট লজেস রোড বার্মিংহাম It's not just about bookkeeping, it's not just about account preparation, it's providing the additional quality on top of the fundamental services that we provide. First consultation is always free, we don't charge. We want that client to be with us for life, so we will look after them where we can. We want them to succeed. If they succeed, we succeed. That's the way we see it. SKN Chartered Accountants, your partners for a brighter business future. Lal Haweli Restaurant at the heart of Walsall. BBC Welsh Curry Award-winning chef Abul Hussain presents most unique and amazing tawa dishes with many flavours and choices. Eat with your family and friends. A unique dining experience never to be missed. Lal Haweli, a 400-seat capacity restaurant perfect for any small parties and functions. Special seating arrangements for ladies and families with prayer facility inside. Mouth-watering tawa dishes. Join Tawa Festival at Lal Haweli. Lal Haweli, home of Tawa, 1 Midland Road, Walsall. Beontvuk for the community, by the community. www.beontvuk.com. Beontvuk for the community, by the community. Assalamu alaikum and good evening. Welcome to our another episode of Health is Wealth. আজকের যে প্রোগ্রামটা যারা দেখায় throughout the world, আজকের হইল গিয়ারি সামান্য ডিফারেন্ট টপিক। আজকের প্রোগ্রাম হইব গিয়ারি ফিজিওথেরাপির উপরে। ফিজিওথেরাপির শোল্ডার পেইন আমার একজন কলিগ, হি ইজ এ ফিজিওথেরাপিস্ট অ্যান্ড অলসো অ্যাডভান্স practitioner. Before I start, আমার নাম হইছে গিয়ারি SOMUZ MIAH. I'm a consultant podiatrist, basically a foot specialist ও বিভিন্ন ওয়ার্ল্ডের মাঝে তারা টাইটল ফুট ডক্টরও তারা ব্যবহার করতে পারে। But before I start the show, again we are broadcasting from Birmingham with Beontvuk. So I would like to welcome my colleague, my friend, Aamir. Aamir, assalamu alaikum. How are you? I'm good, very good. Right. If you could introduce yourself for me, please. Yes, I'm a consultant physiotherapist as well, and I practice as an advanced musculoskeletal practitioner in the Worcester, in the Coventry University Hospital, and I do some private practice as well. So really my areas of interest are knee, shoulder, hips. I leave the foot and ankle to my colleagues, podiatrists like SOMUZ MIAH, but rest of the body, yes, back pain, neck pain, everything. But today is we're going to talk about the shoulder specifically. So okay, when we talk about shoulder, it will be slide 1, please.
Before we go into the subject, today's subject is painful shoulder. If you can also, when you speak English, if you could inject some Urdu, right? Yes, I will and do it. I'll be grateful on that. Yeah. So, আমি যে কইয়া রাখি যে আজকের যে সাবজেক্টটা বেশি অংশ শোল্ডার পেইনের উপরে ওই বাকি সাবজেক্টটা, যাতে আমার কলিগ হি ইজ এ ফিজিওথেরাপিস্ট তো আমরা বাংলাদেশেও ফিজিওথেরাপিস্ট আসুন। It's a large profession in Bangladesh. Physiotherapy or United Kingdom of physiotherapy within the NHS is a big chunk, right? So basically, Aamir bhai, what I'm trying to say, I'm explaining in Bengali that even you're from Pakistan background, innit? Yes. So if you could tell me how long you've been here and how long you've been practicing physiotherapy. I graduated in 2004 and I came here in 2006, so about good 16 years ago. And since I've been practicing and worked in the NHS, worked in the private, so yeah. So if you can put some Urdu in it for our, because as you know, as a Bengali they can speak. जी मैं यहाँ आया था 2006 में, मैंने ग्रेजुएट किया 2004 के अंदर। उसके बाद मैंने मास्टर्स किया यहाँ से, और मास्टर्स करने के बाद NHS में भी काम किया, प्राइवेट में भी काम किया। तो थ्रू आउट काफ़ी लॉन्ग जर्नी है, 15 साल हो गए मुझे यहाँ UK के अंदर प्रैक्टिस करते हुए। Excellent. And also another thing I wanted to know currently I know you're working with one of my friends as well, who's a podiatrist. Yes. You also work for NHS, do you? Yes, part of my work is NHS and part of my work is private. तो सिंपली दोनों का एक अपना रीज़न है। तो आपको NHS में भी काम करना पड़ता है, आपको प्राइवेटली भी काम करता है। तो पार्ट मेरा काम जो है वो NHS के लिए है और पार्ट मैं प्राइवेट काम करता हूँ। Thank you. Slide number 2, please. We're going to talk about shoulder pain. So if you're going to explain me shoulder pain and then source of pain. शोल्डर पेन जो है उसकी जो सोर्स है वो कुछ भी हो सकती है। मतलब लोगों को नेक पेन भी होता है जो शोल्डर में आता है, लोगों को गैस्ट्रिक इश्यूज़ भी होते हैं जो शोल्डर में आता है, हार्ट का प्रॉब्लम भी शोल्डर में जा सकता है। लेकिन हम अगर शोल्डर की स्पेसिफिकली बात करें कि शोल्डर जॉइंट इटसेल्फ, तो दर्द जो है मसल से, टेंडन से, कार्टिलेज से या फिर जॉइंट के अपने अंदर से भी आ सकता है। तो उसकी सोर्स कोई भी हो सकती है। तो बीइंग फिजियोथेरेपिस्ट या एडवांस प्रैक्टिशनर हमारा ये रोल होता है कि जब पेशेंट हमारे पास आए तो हम उसको एग्ज़ामिन करें, हम उससे हिस्ट्री लें और उसके बाद बेस्ड ऑन हमारा एग्ज़ामिनेशन और हिस्ट्री हम उसको एक जैसे कि डायग्नोसिस दें, एक वर्किंग डायग्नोसिस दें। और ऑब्वियसली आज अब फैसिलिटीज़ ज़्यादा हो गई हैं तो हमारे पास अल्ट्रासाउंड स्कैन भी होता है, तो हम क्विकली अल्ट्रासाउंड स्कैन भी एक करके देख लेते हैं कि लेवल ऑफ डैमेज अगर है या कोई चीज़ टूटी हुई है या कोई इन्फ्लेमेशन चल रही है तो उसको भी वो हमारे डायग्नोसिस को मजबूत करती है। You said that source of the pain could be arthritis. It could be also from injury. Yeah. Right. Well, the most important thing I basically want to find out from you, shoulder pain is quite complex, isn't it? It is very complex. Very complex. So most of the patient you will see from NHS, especially for the shoulder pain, do you get it a referral from the GP or do they come direct to you? What I work 2 evenings in the GP surgery as well. So what it is, I work as a first contact physiotherapist. Means that the patient don't need to see the GP first before they see me. So being advanced practitioner, they can just come to us and we can see them. And then like Mr. Miah said, shoulder is a very complex joint, is a very hypermobile, it's a very stable joint at the same time. But again, the source of the pain could be anything from the arthritis, from the tendon tear. It all depends on your circumstances when we take the history, like if you have any fall, any injury, maybe a work related. So we go a little bit more into the
cause of it in terms of whether there is any particular cause which could have caused. And then obviously the age plays a big role as well, because with the aging you always have the degenerative changes in the tendon, like a wear and tear, and that could be the source of the pain. Your comorbidities like diabetes, if you have a diabetes, then you can develop a frozen shoulder quite easily. So the source of the pain, to identify the source of the pain, you have to have a very comprehensive, you need to take a very comprehensive history, and then your history needs to correlate with the examination, and then you need to work on to the treatment. On the basis of history, I always say that history. Yes. Because without history, you are extracting everything from the patient. Absolutely. I always say history is the most weight-bearing of anything else. Everything else is what we've been taught, whatever treatment, we can put them into category of their deformities or category of the pain. But if we don't take proper history, it's quite difficult. Right. It is. Now, one thing we will want to come into it, you just touched in to call a frozen shoulder. Slide 3, please. Frozen shoulder, right? Again, if you could now elaborate on frozen shoulder, first in English and then in Urdu, I think that would be good for us. Yeah, that's right. First of all, I would go back a little bit and say that I cannot disagree with Mr. Miah about the history taking. It's a very important element before the examination and the treatment, you see, to rule out any sinister pathology. Now going back onto the shoulder, frozen shoulder. Frozen shoulder itself is not a condition, it's an end product. So initially you had some kind of maybe arthritis or diabetes related issues in the capsule, injury to the tendon, injury to the cartilage, or any kind of other inflammation around the shoulder which is not treated properly, and you stop lifting the shoulder because of the pain, you develop a frozen shoulder. So in real term, your shoulder has become frozen, you see. So is it like quite stiff? Yeah. Initially you feel more pain than the stiffness, and later on as the time goes, the pain starts to resolve, but the stiffness remains, and then that stiffness actually prevails from there, and eventually the capsule starts to get shrunk, and then you cannot lift the shoulder. There are different phases of that. Usually if it is the second phase, which is most of stiffening phase, it is easier to loosen the shoulder up with the physiotherapy. But if it has gone to the third stage, which is where you cannot lift it at all, and it is quite firm, then you need a more intervention like injection or something before you could do the physiotherapy. I'm going to explain a little bit in Urdu. Yes, please. फ्रोज़न शोल्डर जो होता है ये एक कंडीशन, खुद से कोई कंडीशन नहीं होती, लेकिन आपको जैसे कोई शोल्डर में इंजरी हुई है, आर्थराइटिस है, या कोई इन्फ्लेमेशन थी, या कोई भी इशू चल रहा था जिसकी वजह से आप शोल्डर को लिफ्ट नहीं कर पा रहे थे दर्द की वजह से, तो आप इवेंचुअली फ्रोज़न शोल्डर डेवलप हो जाता है. डायबिटीज़ में भी होता है क्योंकि कैप्सूल का इशू आता है, तो उसकी वजह से भी फ्रोज़न शोल्डर डेवलप होता है. अगर तो वो इतना सख्त नहीं हुआ तो फिजियोथेरेपी से उसको खाली तोड़ना और आराम देना और मूवमेंट लेके आना आसान होता है. लेकिन अगर वो थर्ड स्टेज में चला गया है तो फिर वो खाली फिजियोथेरेपी से ठीक नहीं होता, फिर हमें उसके अंदर एक इंजेक्शन लगाना पड़ता है. वो गाइडेड भी हो सकता है, अनगाइडेड भी हो सकता है. उसकी वजह से वो थोड़ा सा जो कैप्सूल आपका श्रिंक हो जाता है, वो थोड़ा लूज़ होता है. फिर उसमें फिजियोथेरेपिस्ट को काफ़ी आसानी होती है कि उसको वो लूज़ अप करे. Okay. Does weather make any difference? Like I know, currently we are in a cold season. Yeah. If you got frozen shoulder, does weather affect anything or not? There is no direct link with the weather. Yeah. There is no direct link, but some people do complain that they feel more pain in the cold weather or the damp weather. But again, I don't see from the science point of view, from the medical point of view, I don't see any direct connection with that. With that. You see, so I mean, it's just like some people feel, they just observe it. So I don't feel there is direct connection. Okay, basically আমি আমার কলিগরে কইছিলাম যে
ঠান্ডার সময় যে ফ্রোজেন শোল্ডার যে হইতো চাইরো তাই আমি জিজ্ঞাসলাম আর কি যে ঠান্ডার সময় এটা কিছু বেশি এফেক্ট করে নি না এফেক্ট করে না এখন কোনো এভিডেন্স নাই কিন্তু আমরা মনে করি যে ঠান্ডা এটারে এফেক্ট হইতে পারে আর কি বিকজ আমরা মনের সন্দেহে অনেক জিনিস হইতে পারে কিন্তু টেকনিক্যালি এটা অত বেশি এফেক্টিভ হইতো না বিকজ ঠান্ডায় তো অনেক জিনিস ওই ফ্রোজেন করতে পারে আর কি ওইটাই হইলো যে ঠান্ডা বলতে যে এটা বেশি এফেক্ট হইবে এমন কোনো কথা নাই anyway, thank you on that aspect. I've just explained in Bengali and you explained in Urdu. So we are speaking three languages today. Three languages, you know? That's right. I just tell my Urdu listeners as well what the Mr. Miah ने जो कहा अभी okay, वो सवाल किया मुझे कि क्या ठंडे गर्म मौसम से कोई शोल्डर पेन पे या फ्रोजन शोल्डर पे कोई डायरेक्ट लिंक है तो एविडेंस के मुताबिक या साइंस के मुताबिक मेडिकल के मुताबिक कोई डायरेक्ट लिंक नहीं होता कुछ लोग फील करते हैं बट कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है इसका सर्दी गर्मी से या खिज़ा बहार से Thank you. We go to slide 4. Contracted and inflamed capsules. Big word, I don't know. By the way, for your information, I'm also a sports practitioner, but not deep knowledge as you. Well, the only thing that I put only one picture in the slides is simply to explain what exactly happens with a frozen shoulder. You have a capsule around the shoulder, so when you're not lifting it, the capsule start to contract and it get permanently contracted, so it may have started as a part of inflammation and eventually it's get contracted and shrink, and that's the stage 3 where you would need a little bit of more than physiotherapy to loosen it up. But again, if it is just the inflamed and if it is just shrinking, then that's the point the physiotherapy can help you along with the medicines. तो मैंने अभी जो मिस्टर मियाँ को बताया वो ये बताया कि जो शोल्डर जो होता है काफ़ी मोबाइल जॉइंट होता है तो इसके इर्द गिर्द कैप्सूल होता है वो कैप्सूल जो होता है ना जब आप उसको नहीं लिफ्ट कर रहे होते तो वो सिकुड़ना शुरू हो जाता है उसमें से पानी निकलना शुरू हो जाता है सिकुड़ना शुरू हो जाता है और वो परमानेंटली सिकुड़ जाता है तो वो परमानेंट जो सिकुड़ जाता है उस स्टेज पे फिर हमें इंजेक्शन लगाना पड़ता है फिर फिजियोथेरेपी करनी पड़ती है अगर वो परमानेंटली नहीं सिकुड़ा हुआ क्योंकि आपका फिजियोथेरेपी एग्जामिन करके मालूम कर लेगा कि वो परमानेंटली सिकुड़ा हुआ है कि नहीं तो वहाँ से खाली फिजियोथेरेपी फिर वो इफेक्टिव रहती है Yeah, because on the picture 4, what I can see is like contracted and inflamed capsules. You got nice picture there. Yes. It's one shows the normal and one shows the frozen. And আমি কইতাম স্যার যে আমরা যে স্লাইড 4 পিকচারটা বাক্কা সুন্দর ডায়াগ্রামটা দেওয়া হইছে যে একটা নরমাল দেখানি হইছে আর একটা abnormal বলতে কি যে ফ্রোজেন শোল্ডার যেটাকে দেখানি হইছে যে পিকচারটা দেখলে বুঝতে পারবাই যে আমরা কিতে এক্সপ্লেইন করতাম সাইরা অথবা আমার কলিগে কিতে এক্সপ্লেইন করতো সাইরো এটারে বেসিক্যালি কন্ট্রাক্টেড অ্যান্ড ইনফ্লেম capsules. Short, is there a short name for that? Well, yeah, pretty much, yeah. What is it? Yeah, well, it's contracted shoulder. Let's say that. Yeah, that's why they use the frozen shoulder. Okay, so that's a simple name. Simple name. Sometimes we use a lot of terminology, but after that, any frozen shoulder you go. That's right. That's it. Well, in medical terms, in the medical term, there are two words for that. One is the adhesive capsulitis, one is the non-adhesive capsulitis. So in real term, frozen capsulitis mean inflammation of the capsules. Capsule is the adhesive or socket or something like that. Okay, thank you. That's quite good. As I said, if we can pass our knowledge to people, I think that's a help. Can't give them everything in life, but if we can educate them, understand what is normal and what is abnormal, there'll be less worry. Because I realize in my practice, right, I do thorough assessment. I explain them pros and cons for a reason. If something happens, if something goes wrong, they don't panic. They told, my practitioner told me that could be the side effect. So they don't panic. If they don't panic, that's far better for us, because if they panic, they can damage something else. That's why I always explain them that if you have that symptoms, right, then I'll give them like, you will need to do that, do this, or seek that.
I will give you the example of that. You know, when you have a stiffening phase of the frozen shoulder, and then the physio do the stretching Yes. or the mobilization, Yes. the first 2 days you feel really increased pain. So you might thinking of you have gone to the physiotherapist And they made you your bad. pain has increased. But in actual fact, your capsule has loosened up, and that's why you feel the pain. So when we do the mobilization or the stretching of the shoulder, we tell the patient that, look, you need to take some more medicines, painkillers, because it's going to be really sore because we have loosened it up, and it's quite normal, and you should settle down within 48 hours. Okay, আমার কলিগে হয়তো চাইরো যে তুমি তাইন যে ব্লা ফিজিওথেরাপিস্ট নিবা এটার হয় মোবিলাইজেশন, রাইট? ইটস লাইক মোবিলাইজেশন এক ধরনের নট এ ম্যাসাজ বা ইটস মাচ ডিপ ধরনের ট্রিটমেন্ট। এটা কয়েকদিন এটা কিন্তু পেইন হইব, বিকজ দে আর ডুইং মোবিলাইজেশন, ইনক্রিজ পেইন হইব। এটা কোনো অসুবিধা হইতো না, কয়েকদিন পরে এটা সেটেল ডাউন হইব। দ্যাটস অল হে এক্সপ্লেইন করতে চাইরো যে ওয়েন ইউ ট্রিটমেন্ট করলে ট্রিটমেন্টটা কিছু বাদের দিন পেইনফুল হইতে পারে। So if you can explain that in Urdu. Yes, just to conclude that no pain, no gain. तो मैंने जो अभी बताया इंग्लिश के अंदर वो ये कि जब आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं स्टिफनिंग फेज़ के अंदर या फिर लेटर स्टेज के अंदर फिजियोथेरेपिस्ट, तो वो थोड़ा उसको मोबिलाइज करके थोड़ा स्ट्रेचिंग करता है उसकी, तो बहुत नॉर्मली ये होता है कि आपका दर्द बढ़ जाता है, ठीक है, लेकिन वो एक साइन ये भी होता है कि आपका जो शोल्डर है वो खुल गया है, ठीक है, तो आपको उस दौरान मेडिसिन लेनी चाहिए। और फिजियो का ये काम होता है या वो आपको बताता है कि अगले 44 घंटे में 48 आवर्स के अंदर आपका दर्द हो सकता है बड़ा रहे, लेकिन वो सेटल डाउन हो जाएगा। तो इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं होती कि यार मैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास गया था तो ठीक होने के बजाय वो तो ख़राब हो गया मज़ीद। Thank you. Now we will go on to slide 5. It's tendon tear, old age. Can you explain me on that? Well, tendon tear is a very common condition in the old age, because as you use your shoulder a lot throughout your life, the main stabilizers of the tendon, we call them the rotator cuff tendons, you know, and then they get degenerative over the passage of time. There were micro tears. They were weak tendons. In short word, they are weak tendons now with the passage of time. Now, anything sternus or anything different that you do, they just get snapped or torn. It could be partial tear, it could be a full tear. But again, that can give you a lot of pain and restricted movement. And then depending on the size of the tear and the region, as well as your ability to lift the arm and level of pain, we can always decide whether a surgical option would be better or just a physiotherapy or injection, a pain relief injection would be a better option. So basically in Urdu? Yes. हम जब शोल्डर को यूज़ करते हैं तो 4 टेंडन ख़ास तौर पे शोल्डर के इर्द गिर्द होते हैं, जिसको हम रोटेटर कफ कहते हैं। वो पैसेज ऑफ टाइम के साथ उनके अंदर चेंजेस आती हैं, वो वीक हो जाते हैं। ऑब्वियसली एजिंग का प्रोसेस है, तो फिर अगर कोई आदमी कोई चीज़ भारी उठाता है या पुल करता है, कोई चीज़ खींचता है, तो वो वीक टेंडन टूट जाता है। अब वो छोटा टेयर भी हो सकता है, बड़ा टेयर भी हो सकता है। आपकी एबिलिटी, आपके दर्द को देखते हुए और आपकी एबिलिटी टू लिफ्ट द आर्म को देखते हुए हम ये अंदाज़ा लगाते हैं, आपकी एज को भी कंसीडर करते हुए, आपके काम को कंसीडर करते हुए हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि आया कि सर्जिकल ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए, जो कि हार्श होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, या फिर खाली पेन रिलीफ का इंजेक्शन जैसे स्टेरॉइड या कॉर्टिसोन का इंजेक्शन हम लगाते हैं और फिजियोथेरेपी करते हैं, तो उससे पेशेंट को काफ़ी रिलीफ रहता है। থ্যাংক ইউ। বেসিক্যালি আমার কলিগে কইরো যে আমরা বয়স হইতে গেলে বয়স হইলে তো আস্তে জীবনের অনেক জিনিস আমরা লিফটিং করছি, ইতায় দিনের দিন ইতায় ড্যামেজ হইতে পারে, আর যত দিন যাইব কিছু প্রবলেম তো দেখইব, এটার হয় ওয়্যার অ্যান্ড টের, রাইট? ওই অতটুকু হইতে যে বয়স হইলে এটা কিছু আরও দেখা দিতে পারে এক সিমটমটা। জয়েন্টটাও আস্তে আস্তে লুজ হইব, মসলও লুজ হইব, অতটুকু এটা বয়সের লগে একটা জোয়াক। তো এটা অনেক ধরনের ম্যানেজমেন্ট আছে, অনেক ধরনের ফিজিওথেরাপিস্টের কাছে গেলে তারা বিভিন্ন ধরনের ট্রিটমেন্ট করতে পারবো, ইনজেকশন, স্টেরয়েড ইনজেকশন অথবা আল্ট্রাসাউন্ড, কিন্তু 2টা টাইপ অফ আল্ট্রাসাউন্ড, রাইট?
একটা টাইপ আল্ট্রাসাউন্ড হইছে গেরি ডায়াগনস্টিক আল্ট্রাসাউন্ড আমার কলিগরে আমি একটু পরে আমি জিকাইমু তারে হে বালা এটা এক্সপ্লেইন করব না আর একটা হইছে গেরি থেরাপিউটিক আল্ট্রাসাউন্ড ওকে I think you slightly understand what I said. Now I'm yes. So but now I'm going to ask you I was just explaining the old age kind of, but then I made another remark about ultrasound. They assume, but there's a two type of ultrasound. Can you explain me what is therapeutic ultrasound and what is diagnostic ultrasound, please? Indeed. The therapeutic ultrasound, that we don't use that anymore, simply because there is no evidence around it that whether it is effective or not. We used to use it maybe 10-15 years ago, but we don't use it anymore. There are certain private practices. There are certain private practices, but again, there is no evidence, and we don't see. Personally, I don't see any improvement with the patient. Okay. So it's a treatment modality. It's a treatment modality. Okay. You treat the people with that kind of ultrasound. There is another ultrasound, which is a diagnostic ultrasound, which is the main thing. So when you have historically, when you have a shoulder pain, you used to go to a doctor and they were sending you for the X-ray. And X-ray itself is a radiation, you see, and then there will, apart from arthritis or broken bone or something, maybe a calcification in the tendon, you won't be able to find out anything with the X-ray. So it will may only add a little information in the history and the examination as a cause of shoulder pain. But now, because of the diagnostic ultrasound, which is to look at the shoulder ligaments and the shoulder tendons, you can actually look at if there is any tear, if there is any bursitis, and in some cases like your acromoclavicular joint, you can actually see the arthritis in that. And this modality or diagnostic ultrasound recently has been used quite a lot to actually tell the doctors or the physios the real cause of the pain. So it is very useful. So if you could shorten in Urdu between ultrasound, diagnostic ultrasound, therapeutic. जो थेरेपेटिक अल्ट्रासाउंड होता है वो हम पहले यूज़ करते थे, लेकिन उसका कोई एविडेंस नहीं है और पेशेंट के एक्सपीरियंस के मुताबिक भी उसको कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। तो जो थेरेपेटिक अल्ट्रासाउंड है वो हम यूज़ नहीं करते। लेकिन अब जो नई एक चीज़ है उसको कहते हैं डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड, जो कि एक तस्वीर बनाता है। जब वो अल्ट्रासाउंड का प्रॉब रखा जाता है तो एक तस्वीर आती है, तस्वीर से हमें पता चलता है कोई लिगामेंट या कोई टेंडन टेयर है या कहीं इन्फ्लेमेशन चल रही है, तो वो हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है। हमारी एग्जामिनेशन या हमारी हिस्ट्री में वो ऐड करता है, तो हम प्रॉपरली पेशेंट को डायग्नोस कर सकते हैं। एक्चुअली वो एक कैमरा है जो अंदर देख सकता है कि कितना बड़ा टेयर था, अगर कहीं स्वेलिंग हुई है, तो हमें काफ़ी हेल्प करता है वो हमारे एग्जामिनेशन में और डायग्नोसिस में। थैंक यू। बेसिकली আমি তান্ডে জিজ্ঞাসলাম যে what is the difference between therapeutic ultrasound and diagnostic ultrasound. Therapeutic ultrasound নাকি একটা ট্রিটমেন্ট মডালিটি, এটা এক ধরনের সাউন্ড ওয়েভ বিভিন্ন জায়গার ট্রিটমেন্ট। তো হয়তো বর্তমানে আগে ব্যবহার করা হইতো, বর্তমানে ইটস ল্যাক অফ এভিডেন্স অর্থ হইল আমরা মেডিকেল ফিল্ডও নানি অনেক জিনিস আমরা একটা স্ট্রং এভিডেন্স চাই, এটাই অত স্ট্রং এভিডেন্স নাই, কিন্তু অনেক প্রাইভেট ক্লিনিকও এটা ব্যবহার হয়, রাইট। আর ডায়াগনস্টিক আল্ট্রাসাউন্ড যেটা, এটা আপনারা নিশ্চয় জানবা ডায়াগনস্টিক আল্ট্রাসাউন্ড কিতা। বেসিকলি যে একটা বাচ্চা হইতে গেলে বাচ্চারে দেখানি হয় আর কি ইমেজ হিসাবে, ও ইমেজিং, ওই দুইটা ডিফারেন্ট বিটুইন ডায়াগনস্টিক আল্ট্রাসাউন্ড অ্যান্ড থেরাপিউটিক আল্ট্রাসাউন্ড। ডায়াগনস্টিক হয়েছে গিয়ে যে জিনিস আমরা দেখতাম পারি ইমেজ হিসাবে, যেমন বেবি স্ক্যান করই, রাইট, ও মসল দেখা যায় ইত্যাদি দেখা যায়। আর থেরাপিউটিক ইটস এ ট্রিটমেন্ট, যে এটা দিয়ে আমরা ট্রিটমেন্ট দেই, রাইট, অতটুকুই। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। উই উইল গো টু নাও on slide 6, treatment goals. Yeah. Painful relief, improvement of the function, and so on. So yes, if you could elaborate on well, that. Different we have to discuss this with the patient. You know, some people are young, maybe 30 years old, some people are old, like 60-70 years old with having a comorbidity, so their level of function is low, whereas if you are 30 years old, maybe office worker, a runner, your goals may be different. So depending on what has caused the pain,
in the shoulder, we make a treatment plan with you in terms of getting the pain relief, getting the movement back, getting the strength back in the shoulder, and then these treatment part of those treatment plan could be just the physiotherapy, a laser, a shock wave, maybe an injection under the ultrasound guidance or without the ultrasound guidance. So it really depends what we need to really find out what is the source of the pain, and then depending on what is the diagnosis and what we have seen under the ultrasound specifically, we can make the goals and then we can work on them depending on your needs. Some people like the needles and they say that like level of pain is quite high and they wanted to have an injection, and some people don't want the injection. In those cases we do have the laser, we do have the shockwave therapy and the manual therapy that we do. And in Urdu, in short? कुछ लोग बूढ़े होते हैं, कुछ लोग जवान होते हैं. जो जवान होते हैं उनके गोल्स कुछ और होते हैं, बूढ़े लोगों के गोल्स कुछ और होते हैं. लेकिन इन कंक्लूजन आपके गोल्स जो होते हैं वो कि आपका दर्द का आराम आए, आपकी जो मूवमेंट वापस आ जाए, आपकी जो ताकत थी बाजू के अंदर वो बहाल हो जाए. तो उसके जो ट्रीटमेंट के जो हमारे पास मोडालिटीज़ होती हैं, लेज़र भी होती है, शॉकवेव भी होती है, इंजेक्शन भी होता है अल्ट्रासाउंड के साथ, विदाउट अल्ट्रासाउंड के साथ. तो डिपेंड करता है. फिर हम मोबिलाइजेशन भी करते हैं, फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेज भी उसका एक प्लान होता है. ठीक है, कुछ लोग कहते हैं उनको जल्दी पेन का रिलीफ चाहिए और इंजेक्शन अप्रोप्रिएट भी होता है तो हम इंजेक्शन लगा देते हैं. कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, वो चाहते हैं कि वो खाली एक्सरे और लेज़र और शॉक वेव से ट्रीटमेंट लें या मैनुअल फिजियोथेरेपी से लें. अगर अप्रोप्रिएट हो तो हम उनको एडवाइस करते हैं और वैसे ट्रीट करते हैं. Thank you. And we're coming more or less end of our show. It's slide 7, treatment option, which you touched already a bit there. Yeah. But then just to conclude, like you said, there are many type of treatment option. Yeah. Just before we talked about treatment goals, treatment option. With current trend nowadays, you mentioned laser, currently steroid we use a lot. There are other outside of the box, there's a other type of treatment. I want to know, have you come across or do you apply the outside of the box? Normally, there are a lot of treatment options already available, so there is no need to go outside of the box, to be honest. And then I never tried anything outside of the box at this point in time, and I really don't know. There are times when we find in the ultrasound that there is a cyst at the back of the shoulder which is putting the pressure on the nerve. In those cases we have referred to the orthopedics, you see, and then there are cases where we have referred to the pain management as well, where we wanted the nerve block for the shoulder before we do the physiotherapy. So these are something that the orthopedic does it, the orthopedic people do it, and then we refer them before we do the physiotherapy. Okay, yeah, because like currently you can also have hyaluronic acid injections. There are nerve blocks as well. You mentioned arthroscopy by the orthopedics, because I sometimes use, I don't know whether you've heard, again these are outside of the box, right? Have you heard of mesotherapy? No, I haven't used the mesotherapy, but definitely Astonal hyaluronic acid. We have used the hyaluronic acid. A lot of people choose that, hyaluronic acid. But it has its specific space. I wouldn't say that there are, I use it when patient, it depends on the patient contraindication. Absolutely. And same, I use a product called Guna and another product called Hill or Zil. Have you heard of them? Yes, we do have those. I think it's what do you call them? It's a homotoxicology. It's between allopathic and allopathic mix. Absolutely, they are anti-inflammatories, homeopathic. I haven't injected anybody so far with those allopathic, simply because it is outside of the box. Yes, like outside of the box. Said. As a private sector, I look outside of the box when everything fails. Yes. So I've been using both of this product for the last 15 or 20 years.
right? Again, hit and miss. But I will use it if there's a lot of contraindications. Say they have already had so many steroid injections, for example. As we know that there's a certain limit of the steroid injection you can give. Then I will use that. As I said, the outcome can be very good, either mind over matters. Absolutely. Or there could be something there. That's right. Right. So it's very difficult for me to. It is difficult. I think I have heard about the people injecting the Tromil and the Zeal, which is the homeopathic anti-inflammatories, and they got some good results. And the good thing about them is that they are not the steroids. Yes. You see, so you wouldn't have the contraindications that you would have with the steroid. So they can be really helpful, and they can be really helpful in a way like there is no contraindication. If they're not gonna help, they're not gonna do anything else. They're not gonna damage. So that's a good part of it. That's a good part of it. Yeah. Like as I said, that was outside of the box. There's a lot of inside the box, right? There's a lot of modality, and we then, both of your profession, my profession, we have a scope of practice. Absolutely. Every medical profession has their own unique scope of practice. Absolutely. Right? That's why sometimes when we say that we have big caution. We are cautioned because sometimes we don't know, or sometimes to be honest, we're sometimes more ignorant. Right, because we haven't tested or tried it. What we've learned, we believe that is the case. So there are a bit of political biasness. Absolutely. Right? But for me, as I said, in a private sector, I wear both hats. I wear outside of the box, inside of the box. Well, actually, it's a good idea, to be honest. I would like to try that, especially a Zeal or the Tromil injection for the tendon. Because when you put the steroid in the tendon, there is a very high risk of getting it torn, you see. So Zeal, under the ultrasound guidance, if you put the Zeal or the Tromil, that can give patient a very good relief without getting the tendon into the stage where it can get torn. Yeah, but there again, I do understand when you work in the NHS, you have to follow the protocols. NHS is a different, it's completely a different thing. But again, apart from steroids, we don't inject anything else in the NHS. But in the private, we do have that hyaluronic acid, we do have the steroids, and like Mr. Miah said, Zeal and the Tromil as well. I know my podiatrist friend who inject that, so that can be a good option if you have a tendon issue or the joint issue and you don't want the normal medicinal or steroid kind of anti-inflammatory. So we are almost coming to the end of the program. So last option, quick snap in Urdu, shorten it off. जैसे ये ट्रॉमील और ज़ील के इंजेक्शन हैं, ये होम्योपैथिक इंजेक्शन हैं, ठीक है, तो ये स्टेरॉइड नहीं होते, ये भी एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करते हैं. तो कुछ लोग होते हैं वो स्टेरॉइड सूटेबल भी नहीं होता उनके लिए और वो लगवाना भी नहीं चाहते, ख़ास तौर पे टेंडन के अंदर, क्योंकि टेंडन में टूटने का ज़्यादा डर होता है जब आप स्टेरॉइड का इंजेक्शन वहाँ लगाते हैं. तो ऐसी कंडीशंस के अंदर ये जो होम्योपैथिक इंजेक्शंस होते हैं ये काफ़ी हेल्प कर सकते हैं. NHS में नहीं लगते क्योंकि NHS स्टेरॉइड के अलावा कुछ नहीं लगाते, लेकिन जो प्राइवेट प्रैक्टिस है उसमें हाइलुरोनिक एसिड है, स्टेरॉइड है, फिर ये वाले इंजेक्शंस भी आते हैं, तो आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं और सेफ़र भी है. हाइलुरोनिक एसिड भी बहुत सेफ़ है टेंडन के अंदर, ज़ील और ट्रॉमील भी सेफ़ हैं. अगर वो काम नहीं करेंगे तो वो डैमेज भी नहीं करेंगे. And there's another one we never touched as well, PRP. Have you ever heard of that? Yes, PRP. So quick snapshot on PRP from you, and then I'll conclude. जी, PRP, we have done 2 PRP so far. One in the Achilles tendon, you see, and one was for the plantar fasciitis, really bad kind of plantar fasciitis. उर्दू में भी बता देता हूँ. PRP जो होता है वो आपके ब्लड लिया जाता है आपसे और उसको एक ख़ास मशीन में डाल के जो ख़राब चीज़ है उसको अलग किया जाता है, जो आपके प्लेटलेट्स हैं उसको अलग किया जाता है, और वो प्लेटलेट्स को आपके टेंडन जॉइंट या फिर जहाँ ज़ख़म है पट्टे के अंदर या टेंडन के अंदर वहाँ उसको डाला जाता है ताकि वो दर्द भी आपका मरे और उसकी हीलिंग पावर भी इंक्रीज़ हो. Absolutely. If you put it in a nice nutshell. Basically, our colleague, the outside of the box, আমরা কই inside of the box. NHS
অনেক ট্রিটমেন্ট তারা করতো নাই বিকজ তারার একটা প্রোটোকল আছে তারা মোস্টলি আমার কলিগে কইরো যে স্টেরয়েড তারা ব্যবহার করে আর আমার প্রাইভেট সেক্টরও আমি একটা প্রোডাক্ট এটারে হোমিওপ্যাথিক এটারে হয় হোমোটক্সিকোলজি এটা বিটুইন অ্যালোপ্যাথিক অ্যান্ড হোমিওপ্যাথিক এটায় কোনো ড্যামেজ করে না কিছু কিছু রিসার্চ বাড়াইছে যে এটা কিছু হেল্পও করে অতটুকুই যে আমি এটা ব্যবহার করি মাঝে মাঝে যে যারা অনেক ইনজেকশন নিতে পারে না আর একটা হয়েছে গিয়ে পিআরপি হয়েছে গিয়ে নিজের ব্লাড আমরা শরীরে তুমি নেওয়া ও ব্লাডের মিশন আমরা সাইকিয়া বালা রিচ ব্লাড পোর ব্লাডে আমরা ফালাইয়া রিচ ব্লাড বাক টু যে টেন্ডন বা যে প্রবলেম ও না আমরা নিজের ব্লাডের সাইকিয়া নিজের দেয় এটার কিন্তু there are good evidence better evidence on that than the there is a growing evidence there is a growing evidence with regards to the PRP that it works but it all depends on how you are doing as well and who is doing whether you're and doing understanding the pathology as well absolutely whether you are doing it for the right reason whether you're doing it without ultrasound or with the ultrasound by hitting the right tissue and then what type of machine you have used and who is doing the injection. Thank you. Basically, the information we are giving, please just think this as information, not for you to diagnose your problem. Please see a specialist, your GP, physios, podiatrist, or any health profession, whatever related of problem you have. We are only giving you information, guidance, right? And bit of knowledge what frozen shoulder is, so you understand a bit, because when you understand about your condition, it's far better for practitioner to treat you because you are giving them more information. So thank you for watching. আমরা যাই খুশি কি আপনারা যে আমরা যে ইনফরমেশনটা দিলাম এটা বেসিক্যালি একটা ইনফরমেশন এটা কোনো যে মেডিকেল ডায়াগনোসিস নাই এটা আপনারা নিজের হেলথ কেয়ার প্র্যাকটিশনার লগে বুঝা আপনারা নেক্সট স্টেপ নিবাই যে কোনো ধরনের যদি প্রবলেম হয় আর কি এনিওয়ে আপনারা থাকবাই বালা আর বিয়ন্ড টিভি ইজ এ কমিউনিটি চ্যানেল ফর এভরিবডি কেউ যদি এই প্রোগ্রামে আইতে চাও please contact Beyond TV and keep watching Beyond TV. Any last message on Beyond TV, please? Did you enjoy it today? Yes, I enjoyed a lot, and it's a very good program. I must say that we need to do programs like that so that we can pass on our knowledge and understanding to our community. And like the Mr. Miah said, I will say in Urdu. जैसे मिस्टर मियाँ ने कहा कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है वो एक इंफॉर्मेशन है वो कोई डायग्नोसिस नहीं है या कोई ट्रीटमेंट नहीं है हर आदमी दूसरे से मुख्तलिफ है और हर आदमी का मसला दूसरे से मुख्तलिफ है तो आप अपने आप को डायग्नोस मत कीजिएगा अगर आपको कोई शोल्डर का प्रॉब्लम है तो आप मेडिकल अटेंशन या फिर फिजियोथेरेपिस्ट या फिर प्रॉपर हेल्थ प्रैक्टिशनर को रीच आउट करके अपने डायग्नोसिस को लेके ट्रीटमेंट करवाइएगा हम सिर्फ यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो एक जर्नल बात है वो किसी को डायग्नोसिस नहीं दे रहे थैंक यू एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम we will come back with another practitioner with another topic and keep watching Beyond TV and keep watching our program Health is Wealth. Remember in life, if you are healthy, you are wealthy. Khuda Hafiz and Assalamu Alaikum. Beyond TV UK, for the community, by the community. www.beyondtvuk.com. আইলানা ঘরের শপিং করলা না সোনালী সুপার মার্কেটের হয় না তুলনা গো সোনালী সুপার মার্কেটের হয় না তুলনা সোনার বাংলার তাজা সবজি মিঠা পানির মাছ বছর ঘুরে সৌদা করো আছে মূল্য হ্রাস ওল্ডানার বার্মিংহামে সোনালী সুপার মার্কেটে ঘুরে একবার আসো না সোনালী সুপার মার্কেটের হয় না তুলনা গো সোনালী সুপার মার্কেটের হয় না তুলনা সোনালী সুপার মার্কেট লজেস রোড বার্মিংহাম আইলানা
Lal Haweli Restaurant at the heart of Walsall. BBC Welsh Curry Award-winning chef Abul Hussain presents most unique and amazing tawa dishes with many flavours and choices. Eat with your family and friends. A unique dining experience never to be missed. Lal Haweli, a 400-seat capacity restaurant perfect for any small parties and functions. Special seating arrangements for ladies and families with prayer facility inside. Mouth-watering tawa dishes. Join Tawa Festival at Lal Haweli. Lal Haweli, home of Tower, 1 Midland Road, Walsall. Lal Haweli Restaurant. Be on TV UK for the community by the community. www.beontv